अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक टॉपिक जो कि नहायत अहम टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ माइंड स्लेवरी। व्हाट इज़ माइंड स्लेवरी? माइंड स्लेवरी क्या है? एंड ये खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक लीगलाइज टाइप ऑफ स्लेवरी है। लीगलाइज टाइप ऑफ स्लेवरी है। इट्स अ लीगल स्लेवरी है। व्हाट्स माइंड स्लेवरी? माइंड स्लेवरी ऐसे है कि ये स्टार्ट एजुकेशनल सिस्टम से होती है। व्हेन यू गो टू द स्कूल यू आर एक्चुअली बीइंग रूल्ड। ठीक है, आप लोग रूल्ड हो रहे होते हैं बाय सम टीचर विच आर एक्चुअली केजिंग योर ब्रेन एंड स्पेसिफिकली नॉट पॉलिशिंग योर माइंड। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग को जो है ना जंग लगा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू let you know how you're going to utilize it. There are two things. One of them is mind and one of them is brain to develop हो जाता है, जैसे भी डेवलप होगा हो जाएगा। What is mind and how it works? माइंड क्या है? माइंड नीड पॉलिशमेंट। माइंड आप सीखते किस तरह, जब आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होगी, आपके पास सबसे बड़ी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ हर एक इंसान के अंदर है। एवरी इंडिविजुअल इज़ अ लीडर। यू आर नॉट बर्न टू बी अ स्लेव ऑफ एनी लीडर। ये नहीं है कि आप किसी एक की पैरवी करोगे। इट्स नॉट हाउ इट गोना वर्क फॉर यू गाइस। एब्सोल्युटली नॉट। ये नहीं है कि आपके अंदर इमरान खान है और आप उसके नीचे तरले कर रहे हैं। इट्स नॉट नवाज शरीफ एंड देन हम उसके नीचे तरले कर रहे हैं। इट्स सो रॉन्ग थिंग, वी शुडंट डू। अगर मुल्क, अगर क्या 70 साल से मुल्क यूं ही चल रहा है। द पॉलिटिशियंस जो कि इस मुल्क को रूल कर रहे थे 70 सालों से, आज भी वही रूल कर रहे हैं। देयर आर सेम फैमिलीज, सेम हबीब एंड दाऊस फैमिलीज, दैट आर द रिचेस्ट फैमिलीज एंड टिल आर रिचेस्ट। व्हाई? पूरा पाकिस्तान कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए। दैट आर वेरी 1% ऑफ 1% के लिए 99% कंट्री काम कर रहा है। दे आर डूइंग द थिंग्स दे आर थिंकिंग दे आर डूइंग फॉर देयर होल फैमिली एंड स्टफ, बट दे आर एक्चुअली utilizing their energy for those bullshits. It's a clear thing. It's not how कि आप आपके अंदर पॉलिटिकल encouragement ही नहीं है. You are not even able to speak in front of some 5 people even, and you're hoping that you will be a leader. You are such a mysterious thing. You should speak in front of people even. From there you have to start and you have to move on. You have to be capable of speaking. Encouragement is the thing. You don't need some big things to attend some seminars for such things, that how to speak publicly. It's not a very big thing. You just need to speak. For that you need some knowledge. अब पाकिस्तान के अंदर किस तरह से काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोगों को एंटी एस्टेब्लिशमेंट किया गया फौज के खिलाफ। किस तरह से पाकिस्तानी लोगों को फ़ौज के खिलाफ खड़ा किया गया? एक नज़रिया जो कि पिछले तकरीबन 20 सालों से चला आ रहा है कि फ़ौज इस मुल्क को खा रही है। वेल, कौन सा इदारा जो नहीं खाता? हर बंदा खा रहा है। इट्स नॉट जापान। वी हैव टू मेक इट जापान इन इवन मोर। आइडियलाइज कंट्री किसी को नहीं करना हमने। वी हैव टू आइडियलाइज सम थिंग्स, नॉट एनी कंट्री और स्टफ, बिकॉज देयर आर आल्सो एरर्स, बट जापान इज नियर टू आइडियलाइज थिंग। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि जी वही सेम थिंग्स आर हैपनिंग इन द कंट्री। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट। अब इमरान खान का नज़रिया किस तरह चमका? देयर इज़ अ थिंग इन द कंट्री एस्टेब्लिशमेंट यू एंड इमरान खान जस्ट brought the thing into the public. Yeah, they are doing this stuff and I am against them. Imran Khan said them Mr. X and Mr. Y and how the things going. यानी कि आप, ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। आप लोग एक क्वेश्चन रेज कर दें, पूरी दुनिया में यही होता है। पाकिस्तान के अंदर ये जो है ना लोअर स्टैंडर्ड थिंग्स हैं, वेरी लोअर स्टैंडर्ड थिंग्स कि यू आर ऑन द पॉलिटिकली जस्ट। ये होता है कि यार इस्टेब्लिशमेंट मुल्क खा रही है, मुल्क खा रहे हैं, जनरल मुल्क खाते हैं। जनरल जो है ना वो बाहर जाके जजीरा बनाते हैं। बिल्कुल, दे डू इट, बट दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज रेज्ड बाय इमरान खान एंड द सोसाइटी, एंड इमरान खान उसका सोल्यूशन पेश करता है। इमरान खान कहता है फॉरेन पॉलिसी हमारी है, सो हाउ द पीपल आर अंडर द केज। इतना सा दिमाग है तुम लोगों का, दुनिया का दिमाग इतना है
इनफिनाइट लेंथ हैं। बट पाकिस्तानियों का दिमाग ये, खासकर पाकिस्तान में लड़कियों का दिमाग बिल्कुल भी नहीं। दे आर टोटली इल्ड। Some bullshit are we are producing. We are responsible for them. We the men, society is responsible for that shit. How we are doing that stuff? We are not encouraging our girls, our sisters, our own daughters, but to do some things. We are creating a cage for them. We are creating some boundaries for them. But there are no boundaries in this world that are totally free. If we are doing something very nicely, कोई बाउंड्री नहीं है। हम लोग ये नहीं समझेंगे योर फैमिली विल बी डूइंग दिस unknown slavery but a recognized slavery in Pakistan and your whole children will be doing it. पूरा पाकिस्तान ये कर रहा हो and you will do it. You are not here to raise any question. You can't. आप क्वेश्चन करेंगे oh this question oh man you are just like that stuff. You are changed. No, man, you have to raise questions. This world will be an intellectual world now. We don't need some type of bullshit who will be doing some type of like, ये बंदा मजदूरी कर रहा है वो फलाना मजदूरी कर रहा है. We don't need any मजदूर्स more in this world now. This world is now intellectual power. एक बहुत बड़ी डिबेट है कि how the things are equalized in terms of happiness and sadness in every single human being. Every single human being की खुशियाँ और गमियाँ की परसेंटेज 100 है. And all are same. It's never कि one is enjoying more and one is not. ये मेरी बात लिख लो कहीं पर भी. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये ऐसे है, हर बंदा इक्वल एंजॉय करता है लाइफ और किसी ने लाइफ को ज़्यादा एंजॉय नहीं किया. ये मैं आपको बता रहा हूँ. ये लिख लो आज कहीं पर. इक्वल. किसी ने टाइम, कोई किसी का कौन सा टाइम होगा, किसी का कौन सा टाइम होगा, किसी ने लिमिट, उस लिमिट में इतना ज़्यादा एंजॉय कर लिया होगा कि उतना अगला 20 साल में फिर करेगा. ये इतनी बड़ी परसेंटेज है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं. दैट आर खुशियाँ, दैट आर नॉट समथिंग टू गो for them. You have to do the things which are a problem solver. Become a problem solver, not a problem creator. This is another philosophy. If there will be no problem, how the problem solver will be there? All of them just need to be covered into 1 hour even. इनको एक एक घंटा लगेगा हमें philosophy को एक एक को हम लोग जो है ना अगर हम explain करने बैठ जाएं. But the thing is you don't need to do slavery, man, at all. You need some basic human rights which are medical insurance, educational insurance and stuff. You don't need to go for basic understanding of life, basic needs of life. Yeah, basic needs के लिए you are surviving, you're 60 years in that. That's totally, that's totally a bullshit, nothing more. Sorry to say. That's not what Islam says. Islam is a very globalized thing. You are not even been, ये जो वर्जन ऑफ इस्लाम चल रहा है ना, it's not what Islam is. इस्लाम एक बहुत ग्लोबलाइज मज़हब है, दीन है. किस तरह से ग्लोबलाइज मज़हब है वो. लेट जस्ट टॉक अबाउट द ग्लोबल थिंग्स. ये नहीं कि जो है ना यहाँ पर क्या हो रहा है. इस्लाम एक सडन स्प्रेड था. इस्लाम ये नहीं है कि मक्का के अंदर रहा. इस्लाम सडन स्प्रेड था. मक्का से शुरू होकर सडन फैला, शाम आया, यहाँ आया, इराक आया, सडन स्प्रेड हुआ, बरसगीर पहुंचा, आज पूरी दुनिया में ग्लोबल. सडन स्प्रेड इसको कहते हैं. ये नहीं है कि मक्का फतह कर लिया है, अपने 2-4 घर बना लिए हैं, वी आर सिटिंग इन दैट, वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ. नॉट व्हाट इस्लाम इज. यू आर टोटली अगेंस्ट द फर्स्ट रूल ऑफ इस्लाम व्हिच इज ग्लोबलाइजेशन वर्सेस इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिटी क्या है एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है, दैट इज टोटली मिसऑर्डर्ड इन आवर थिंग्स. वी आर गोइंग थ्रू the phase of individualism. Every single human being, it is a big crisis for a human being. Why? Because the money is the thing. Money is the individuality. It's not Hazrat Abu Bakr Siddiq who's like, oh, the war is going on, so everyone should bring all things in their house, and it will be utilized by the people which are unknown. Even our brothers in Islam, no one is unknown. Even it's like Islam says, everyone is your brother and is your sister. Right? It's a big philosophy, man. इससे बड़ी कोई फिलॉसफी पैदा नहीं हुई आज तक कि हर कोई तुम्हारा भाई और बहन है. ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है आपका, इससे बड़ी फिलॉसफी दिखाओ मुझे तुम. इस्लाम को हमने फिलॉसफिकल एंड साइकोलॉजिकल समझा ही नहीं है. वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उधर मक्का में बैठ के इतनी बड़ी फिलॉसफी बयान कर रहे हैं, इतनी बड़ी साइकोलॉजी बयान कर रही है, बहन भाई। व्हाई ओनली दिस थिंग, व्हाई नॉट इस्लाम आपका चचा जात ये है वो, नो, एवरीथिंग इज देयर। कि मुसलमान अगर किसी भी कोने में हो ना, उसको कोई दर्द है तो इधर बैठे हुए मुसलमान को, इट्स अ बिग साइकोलॉजी, इट्स अ बिग फिलॉसफी मैन। दैट्स नॉट व्हाट वी हैव learned from Islam. We have just learned what? Praying the namaz 5 times a day only, these roza rakh li only, and just these going to the Hajj once or more, going to try that Hazrat and going to just Bakshawana. That is totally individualism. For your own self, you're doing the stuff. You're not doing anything for full humanity, for globalization. You're sent here to do these things. अगर तुम्हें खाली नमाज, ये रोज़ा, ये हज करना होता ना, you should be planted into any single planet there, and you should pray all these things there. Why you're made globalized? Why you're made globalized? ये globalized system क्यों है? So we will be talking about these things more. We will have like hours of debates and hours of conversation on these topics of psychology, philosophy, political systems. But for now, you have to understand. You have to आपका VN global होना चाहिए. It should never be a national level or lower type of thing. Global vision रखना है आपने. Always think globally. This mind is a global thing. It's not to think about your own चार पाए की मस्जिद. ठीक है ना, चार चप्पे की मस्जिद के लिए नहीं सोचना आपने. यू हैव टू थिंक ग्लोबली about all things. If you're not, you just have boundaries in your mind. You have to think globally, universally. The things have to go on, and that's what Americans do. That's what the British do. That's what every intellectual do. They are thinking about the environment even. That's how we're gonna save our earth. ठीक है, हम लोग अब हमसे गोरा कितना साल आगे है, कितना साल आगे, बहुत आगे. वे आर नॉट टू बी लाइक ओ फलाने आगे चले गए हम पीछे रह गए. यू हैव टू गो फॉरवर्ड अंटिल आपने कोई काम नहीं करना. आपने जैसे अपनी माइंड को बाउंड्री फ्री कर लेना. दैट्स द थिंग. माइंड को बाउंड्री फ्री करेंगे, एवरीथिंग विल बिकम जस्ट इट इज. You have not to create any boundary. You have to go for the thing. You have to be globalized. You shouldn't be a slave of any individual. Don't run for money only. Go for your some intellectual power. You have to be an intellectual rather than being a slave of money. Money is a your basic needs are being fulfilled. What do you need more? What do you need more? What do you need? क्यों नहीं बाहर लोग इतना पैसे के पीछे भागते हैं? हालांकि वो जो हमारा इतना बनता है पैसा वो हमारा बन रहा है. देयर इज नॉट लाइक दैट स्टफ ओनली. ओके, सो इट्स लाइक कि उनको बेसिक नीड्स मिल रही है, मेडिकल मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट मिल रही है. पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट है. यूरोप के जितने मुल्क है सब के अंदर एक ही ट्रांसपोर्ट चल रही है. वो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर वीज़ा फ्री जा सकते हो. यू कैन एंजॉय एवरी टाइप ऑफ टूरिज्म. पाकिस्तान हैज ओनली वन थिंग. Pakistan has only one type of entertainment, that is called what? Food. Food is entertainment. Bas. No tourism. Even tourism is there, so no one can afford that stuff because the experience, there are much expenditures. आप यहाँ से ज़रा जाए ना इधर स्वात कलाम की तरफ, वहाँ पर बैठे होंगे माफियाज. देर टोटल माफियाज दैट आर नॉट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्योंकि रोड्स क्यों नहीं बनने दिए जाते पता है? Adventurous. What is adventurous, man? You have to do some adventures. Go on some build the stuffs there, but create the roads, man. Roads create करें आप लोग. Proper metro पूरे मुल्क में होगी. Not even the 3 or 4 cities are building up. That is one Lahore and one Islamabad. It's not that. पूरा sudden spread चाहिए हमें. It's not like कि मुल्क में वसाइल नहीं. एंड टैक्स के ऊपर अगर हम आ जाएं तो टैक्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट जितना ले सकती है उतना लेती नहीं है. जितना लेना चाहिए उतना भी नहीं लेते. एंड पाकिस्तानी समझते हैं हम बहुत टैक्स देते हैं. यू डोंट इवन गिव अ शिट मैन. यू हैव टू गिव इट. पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एक डिस्टेबलाइज सिस्टम बन चुका है. नथिंग मोर. वी हैव टू मेक इट स्टेबलाइज सिस्टम बाय क्रिएटिंग. डेनमार्क में क्या है? 70% टैक्स ऑन इवन सैलरी. यू आर अर्निंग 20,000, यू आर गोना गिव 17,000 टू द गवर्नमेंट. बट वो 17,000 गवर्नमेंट आपको जितना उसके बदले दे रही है वो आपकी सोच है. 70% tax, man. We'll be talking more about it. Today conversation is like that. It's done. Thank you. Allah.